one of the interesting part of the bliss is, the hygiene and health. And health, if we say, as per WHO, health is not just a state of, removal of illness or infirmities, but it's much broader. It's much broader in scope. So we are trying our level best to reach out to all the sectors in the Kumbh. This is a Kumbh which I will term it as a digital Kumbh. पहला है AI आर्मी ऑन पेट्रोल ताकि सब लोग सुरक्षित रह सके. दूसरा है फ्लाइंग छतरीज ड्रोन. तीसरा है कुंभ सहायिकास. चौथा है QR कोड्स फॉर FTWs. फिर पांचवा है स्मार्ट लॉस्ट एंड फाउंड. फिर छठा है मैप्स का जादू. सातवां है वर्चुअल रियलिटी का मैजिक. फिर है टोकनाइजिंग योर फेट. और लास्ट जो है वो हेल्थ टेक ब्लिस है. Among all these important tech interventions in this Mahakumbh, 1+1 is not 2 for us. 1 for 1 is 11 for us, and we believe in accelerating our programs. One of the keys to success is a large volunteering force. We have more than 1,500 volunteers on the ground. We are making sure each hand washing occasions is, taken care well. There are a lot of places in Kumbh, a lot of akhadas and a lot of others. Shraddhalus are also actually offering the food. We are making sure hand washing opportunities are being made before people actually sit for hand washing and after they eat the food. Also, we are giving, Dettol soaps to the Kalpvasis who are going to stay there for 45 days. And we're also working very closely with all the Pandits and the Pandas there. They are the religious heads there, and they are the ones who do all the Karamkand and all the religious pujas. And it's very important to train them, to sensitize them. We're working with them very closely so that in their regional prayers, they actually also mention about hygiene, and the hygiene becomes the foundation for good health. Also plan to actually, educate others who are coming there through Nukkad Nataks. It's one of the lifetime opportunities to interact with millions of people, and our Nukkad Natak teams are there in around 20 batches every day in different sectors, and they are working on the key messages on hygiene. साफ सफाई छूट गई तो मुश्किल हुई हजार. दोस्त न आया काम कोई जब दुश्मन खड़े तैयार. क्या कहा साफ सफाई के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी दुश्मन. हाँ भैया. कौन है वो दुश्मन? कीटाणु. हजार कीटाणु सेना लेकर टूट पड़े मासूमों पर. महाभयंकर जंग हो गई और मच गया हाहाकार. अस्पताल से प्यार हो गया, बीमारी से हो गई यारी, बिस्तर का ही साथ रह गया, दवा खर्च ऊपर से भारी. और क्या हुआ? होना क्या था? तन मन धन सब खोना ही खोना था. और इस छोटे से परिवार में हर पल का बस रोना ही रोना था. उसके बाद क्या हुआ? अरे हुआ क्या? वहाँ पर आया एक सुपरमैन. तो सुपरमैन वाला गाना सुनाओ. अरे दीवानो इसे पहचानो, कहाँ से आया ये है कौन, ये है कौन, ये है कौन, ये है सुपरमैन. अरे भाया, कैसा सुपरमैन हुआ है? हम तो सुने थे सुपरमैन हुआ तो लाल चड्ढी वाला होता है. अरे मूर्ख, ये है हरी टोपी वाला असली सुपरमैन. रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ. सुपरमैन कर गया कमाल, हटा दिया है दो धमाल. दो हाथों ने करी सफाई, फिर हाथों में ताकत आई. कीटाणु की जबरदस्त आई, दंदन भाई, दंदन भाई, दंदन भाई. कीटाणु. On the top of that, we are also going to award and reward some of the people who are the real heroes on the ground through Dettol Banega Swasth India campaign, and I'm very sure this will go a long way in India's journey for the Viksit Bharat concept.